Hello friends, welcome ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। Pedagogy English Pedagogy ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯୋଉମାନେ ବି ଇଂଲିଶ pedagogy ଖୋଜୁଥିଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ସେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ କେବଳ pedagogy ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଷ୍ଟ ୱାଚ୍। ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ pedagogy ର ଏ ସେସନ୍ ନୁହଁ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେସନ୍। ଆଉ ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉଠି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡର ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଇଂଲିଶ pedagogy କୁ ଫୋକସ୍ କଲା ଭଳିଆ ଥିଓରି ପାର୍ଟକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଇଏ ତମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ନର୍ମାଲ 1500 ସିରିଜରୁ ଗୋଟେ ଦିନର ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଛି ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେ ନ ଜାଣିଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଯିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ 1500 ସିରିଜର ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜି ହେଇଯିବ ଏ ସେସନ୍ ପରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ସବୁ ଇଜି ହେଇଯିବ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଅ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ କରିଦିଅ ଆଉ ମଝିରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ ହବନି ନନଷ୍ଟପ୍ ଚାଲିବ ପୁରା ଜୋରଦାର ଚାଲିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଇଦା ପୁରା ମିଳିଯାଉ। ହଁ ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା ଆଜି ପୁରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। आरंभ करिवा आज सेशन को। वेलकम वंस अगेन टू एक्सप्लोरिंग गोल्स। सब्सक्राइब करना जो नुआ अच्छे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया सब इंपोर्टेंट लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस एंड फ्रेंड्स जेमति कि तुम जानिछो एक्सप्लोरिंग गोल्स हमर एप्लिकेशन मध्ये रही एप्लिकेशन रे जदि जॉइन करिवो यू विल गेट एवरीथिंग इन ऑल काइंड ऑफ गाइडेंस सो जो मैंने भी जॉइन करनो आप रे एक्सप्लोरिंग गोल्स आप गूगल प्ले स्टोर रू डाउनलोड करि परिवो किंबा बेसी डिटेल रे जानिबा पई नंबर रे व्हाट्सएप मध्य करि परिवो फॉर मोर डिटेल्स। Yes, Gautam. It is also beneficial for B.Ed entrance 2024, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huh? Whatever. And ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯଦି ଜଏନ୍ କରିନ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନର ଲିଙ୍କ୍ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯୋଉଠିକି ଲିଙ୍କ୍ ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। ତ କେବଳ ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ଏତିକି କହିବାଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ବା ଯେମିତି ତୁମମାନେ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଖିଥିଲ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ବଟ୍ ଇଂଲିଶକୁ ଫୋକସ୍ ଅଧିକା ରହିଛି ଏଇ ସେସନରେ ତ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଅଲ୍ ଓକେ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ଚलो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। अच्छा सब जिनस मु डिस्कस करिबिनी सब मस्त मस्त जिनस जोगुड़ा सेगुड़ा डिस्कस करिवा आ एथिरे हजार हजार क्वेश्चन डिस्कस हेसिबो आ तार आंसर तम मानको पय सहज हेसिबो। ओके तो इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एठू हमें आगु जिबा। इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टूड इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो जानि छ हमें ग्लोबलाइजेशन पय ये महत्वपूर्ण निश्चय दरकार एंड aim and objective रे the general aim of teaching English is to enable the learners an effective user of English language after developing their four basic skills जोगुड़ा को हमें कहूचे LSRW कौन कहूचे LSRW कौन सेटा कौन से LSRW एट लिखा है listening speaking reading and writing listening speaking reading and writing clear wait मैं एटा टिके बड़ कर दूची so that तमन को easier हबो।
ठीक अछि तो आमे जोटा देखुथिले एम एंड ऑब्जेक्टिव सेट की जिबा यस the LSRW listening speaking reading and writing LSRW skills development in listening means the development of semantic aspect of English which enables the learners to listen to English sounds properly तो जेतेबेले आमे लिसनिंग कथा कहूचे तो सेमांटिक एस्पेक्ट आसुची जोठी आमे लैंग्वेज रो प्रोनाउंसिएशन को जानूचे एंड ताको बुझिबा को चेष्टा करूचे development in speaking and reading means the development of phonetic aspect तो देखो सेमांटिक हेले लिसनिंग स्किल सहित रिलेटेड स्पीकिंग और रीडिंग हेले फोनेटिक स्किल सहित रिलेटेड ओके इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसी पारे ओके तापरे देखो डेवलपमेंट इज राइटिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिक एस्पेक्ट तो ग्राफिक राइटिंग सहित रिलेटेड हैला आउ थर कहि दूची क्वेश्चन आसी पारे लिसनिंग सेमांटिक सहित स्पीकिंग और रीडिंग फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश सहित रिलेटेड ठीक अछि ओके नॉर्मल फुल आंसर दे दैछंती गौतम तमरो अमृता यस प्रिंसिपल्स को जदि जीवा हमें ताहले टू ओवरकम फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स कौन सब प्रॉब्लम्स जे सोर्स ऑफ बर्डन बोली हमें कहूचे लर्निंग टाकू and stress on children and parents which causes distortion in the quality of education to overcome this problem NCF 2005 recommend करछि पांचटा गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलर डेवलपमेंट सब जिंस जे इंग्लिश पेडागोजी सहित कनेक्टेड डायरेक्टली थिबो बोली माने नाही नॉर्मल पेडागोजी सहित कनेक्टेड जिंस भी हम आज डिस्कस करूछु कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एनसीएफ कहला प्रेशर जमती न पड़िबो छुआ माने इंटरेस्टिंग वे रे पढ़िबे सेति पई नॉलेज को आउटसाइड स्कूल रो सीन सहित कनेक्ट करिबा लाइफ सहित कनेक्ट करिबा ensuring that learning shifts from rote method the rote method रो अगेंस्ट एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहूची लाइफ आउटसाइड स्कूल सहित कनेक्ट करिबा नॉलेज को एंश्योर करिबा लर्निंग टू शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड को फॉलो करिबा नाही एनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक सब बड़े बियॉन्ड टेक्स्ट बुक दिबा एनरिच करिकुलम को फॉलो करिबा एनरिच क्लासरूम कथा में गिफ्टेड स्टूडेंट्स मानन को पढ़ेला बेले को टाइप रो क्लासेस दरकार बोली कहूचे एनरिच्ड करिकुलम एनरिच्ड क्लासेस दरकार बोली कहूचे ओके तापरे मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विथ क्लासरूम लाइफ एग्जामिनेशन को कौन करिवार अछि मोर फ्लेक्सिबल करिवार अछि आ ताकू क्लासरूम रो लाइफ सहित इंटीग्रेट करिवा बा कनेक्ट करिवा बा लिंक करिवार अछि हेले कोन हे जबो इंटरेस्टिंग हे जबो लर्निंग टा ओके नेक्स्ट इज nurturing and overriding identity informed by caring concern within the democratic polity of the country तो जेमिति इंडिया गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री सेमिति आमे क्लासरूम रो इंटरेक्शन टाकू मध्य कोन करिबा डेमोक्रेटिक करिबा ओके किछि स्पीड होनी लक्ष्मी निज को स्पीड कर दियो जदि स्पीड होची बोली भाबुछ किछि स्पीड होनी निज को स्पीड कर दियो एति स्पीड तो रहिबो नि रहिबो आ एमती नुह कि आमे 40 टा पेज आज कवर करिवार अछि तो एमती सोई जिबा 40 टा तो करबिनी काहे कि एमसीक्यू को आ गोटे सेशन रे मु डिस्कस करबी आज केवल थ्योरी रहबो जार इच्छा नै पढ़ा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ लैंग्वेज कौन as language is only means of communication for the human therefore it is an inseparable part of human society तेणु जेहेतु लैंग्वेज टा कम्युनिकेशन सहित रिलेटेड जे कोनसी लैंग्वेज हो ना काई की से तमे ओडिया हो कि इंग्लिश हो कि जहां भी हो इट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन तेणु हमर मनर भाव को प्रकाश करिवार को हम यूज करछे तो जेहेतु ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल हम सोसाइटी रे रहउछ आ सोसाइटी रे डिफरेंट लोकन को सहित इंटरेक्ट करछे तेणु एटा निहाती दरकार और नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होछि लैंग्वेज इज लर्न लैंग्वेज को लर्न करा जाए लैंग्वेज इज एन एक्वायर्ड बिहेवियर एक्वायर करा जाए एमती नुह कि जन्म रु थाए लैंग्वेज हम भीतर मनीष छुआ कि जन्म होइते त माने नुह जे आमे जन्म हेले कि टिके क्षीर पी दवा हां आज टिके बिस्कुट खाइबा आज टिके हॉर्लिक्स पी दवा एमती पॉसिबल नुह लैंग्वेज इज ए सिस्टम लैंग्वेज इज वोकल
Language is for communication based on cultural experiences, system of symbol, particular set of rules को follow करे language. Language is a skill subject, language is arbitrary, and language is made of habits. Okay, तो एठी कौन कहिदला symbol of language is arbitrary. एटा कौन बुझुचो? Arbitrary माने कौन? Symbols of language टा arbitrary कहला. तो कौन से स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करे नहीं तामन. ओके, जगह रु जगह सिचुएशन रु सिचुएशन अनुसार वेरी करे. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन हो? इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस. It is observed vocabulary from all languages of the world. Hence, English is the most dynamic language of the world. It is having following characteristics. कौन अच्छी characteristics English रो देखिबा. ठीक है, जो माने नुआ नुआ करूछ ना क्लास, जो माने नुआ नुआ कनेक्ट हेचो क्लास सहित सेमान को हुए तो कौन सी जगह रे टिके बहुत स्पीड हे गला वाला फील हे पारे, बट एक्चुअली होनी. आराम से धीरे धीरे ही हमें पढ़ुछे. English is heterogeneous as it adopts words from other languages. You know, heterogeneous in nature. English is a systematic language as it functions through sounds, words, and structures. The study of system of sound is known as phonology. Directly question asichi agaru. Language is dynamic, not static. Yes, English is a mixture of languages. It is not 100% Latin, not Greek, not German, not or Arabic. Hence, English is unique in nature. It is constantly changing, dynamic in a nature. जो type है selection में. Language is dynamic, not static. So it is constantly changing. English is a highly creative language. That's why it has wide variety of prose and poetry. एसबू अच्छी. इंग्लिश इज हाईली प्रोडक्टिव लैंग्वेज, एक्सट्रीमली मॉडिफिकेबल, मॉडिफाई करा जाई परिबो इंग्लिश को. ओन ग्रामेटिकल रूल्स अच्छी, तार स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस अच्छी. हेंस इट इज ग्रामेटिकल इन नेचर. ओके, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर. कौन हमरो एक्सपेक्टेशन रहउची लैंग्वेज टीचर को पाखर? टू हैव बोथ प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रोफेशनल स्किल्स. दीटा जाक थिबा दरकार. नॉलेज और स्किल दीटा जाक दरकार. नॉलेज तो ठीक अछि, स्किल टा कोन? एटा पेडागोजी टा होछि स्किल. केमिति पढाइबा एटा भी निहाती दरकार. केवल निज भीतर ज्ञान थिले किछ लाभ नै. ओके, प्रोफेशनल नॉलेज को तापर जीवा. इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग हेड्स दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स. त कोन कोन प्रोफेशनल नॉलेज रही दरकार गोटे इंग्लिश जने इंग्लिश लैंग्वेज टीचर को पाखरे? कंटेंट नॉलेज थिबा दरकार, पेडागोजिकल नॉलेज थिबा दरकार, नॉलेज अबाउट लर्नर्स थिबा दरकार, नॉलेज अबाउट करिकुलम थिबा दरकार. आउ कौन कौन स्किल थिबा कथा? मोटिवेशनल स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, असेसमेंट स्किल, पर्सनल प्रोफेशनल स्किल, टेक्नोलॉजी स्किल्स, planning skills. This is not only for teach English language but to teach any subjects. जे कौन से सब्जेक्ट्स तमे पढुचे सब स्किल्स थिबा दरकार. फर्स्ट दिया जायछि चारिटा हमर नॉलेज सहित रिलेटेड स्किल्स. इंग्लिश लैंग्वेज रो प्रोफेशनल नॉलेज कथा कहिछि आ तापरे अछि प्रोफेशनल स्किल्स. बुझियला? थैंक यू, बहुत धन्यवाद. जो मैंने जॉइन कर समस्त को मेनी मेनी थैंक्स. आज जॉइन करना से कथा बुझे आम कि नहीं, बट आम टे समस्त को निश्चय शेयर करदे. यहाँ सब बड़े क्वेश्चन आसुचे तुमने जान जो मैंने पेडागोजी मो पाखु आगु भी क्लास कर जो मैंने नुआ भी जॉइन करोटी ना कौटी देखी पढ़ी जो बीएड प्रिपेयर कर हुए तो फर्स्ट टाइम हो. तो मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को जिते बड़े आमे जीवा सेते देख कौन कौन अच्छे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग रे. द डिफरेंट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर गिवन बिलो. फ्रॉम नोन टू अननोन, जना रु अजना को जीवा. फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम सिंपल रु सरल रु कठिन आड़े जीवा. सरल जिनस सहज जिनसटा को आगे जानिले तापर धीरे धीरे कठिन आड़े गले बुझी हो.
तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कौन ए सब वे रे आमे जदी पढ़ेइबा ताहले गोटे छुआ भल भावरे सबु टॉपिक को शिखि परिवो जानि परिवो बुझी परिवो एवं ताको अप्लाई करि परिवो सक्सेसफुली कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जहाँ देखुचे जहाँ छुईले जानि परिवा सेटा को आग विश्वास करिवा तापरे इमेजिनेशन आडी जिवा एनालिसिस टू सिंथेसिस प्रथमे काहेकि हला केमिति हला सेटा जानिबा तापरे निजे किछि जिंस करिवा एनालिसिस ता जहाँ अछि ताको बुझिवा सिंथेसिस ता होछि किछि नथिबा जिंस सृष्टि करिवा एनालिसिस इज रिलेटेड विथ divergent thinking किंतु analysis is related with convergent thinking but synthesis is related with divergent thinking सर आज मु एते टायर्ड हे जाई छी फिर भी क्लास जॉइन करी छी तमे जॉइन करी छ दीप्तिमयी मु क्लास करू छी डू यू नो व्हाट आई हैव डिड द होल डे टुडे यू कैन नॉट बिलीव मो जगह थिले फ्लैट हे कि घुंगुडी मारी के सो थांता एनालिसिस टू सिंथेसिस तापर पर्टिकुलर टू जनरल कौन जोटा मु कहउतली कौन पर्टिकुलर टू जनरल कौन रे स्पेसिफिक टू जनरल तो स्पेसिफिक टू जनरल ओके स्पेसिफिक टू जनरल टा कौन एसआईजी नहीं कि एसआईजी आईटा कौन इंडक्टिव राइट ठीक उल्टे दियो ताको जीडीएस जनरल टू स्पेसिफिक होची डिडक्टिव यार ऑपोजिट रे जदी छिबा ताले एको डिडक्टिव को आछ ताले स्पेसिफिक कोन एग्जांपल जनरल कोन रूल तो एग्जांपल रो रूल भी हमें कहि परिबो से दिन पढिथिला हमें क्वेश्चन टा मने पडुची एग्जांपल रो रूल को जाओ कि रूल रो एग्जांपल को जाओ कोटा मोर एप्रोप्रिएट एक्चुअली जदी देखिबो ताले इंडक्शन आगो एक्चुअली इंडक्शन बाय इंडक्टिव मेथड ता आगो आसबा कथा बट सेठी ऑप्शन रे किछि नथला आ एम्पिरिकल टू जनरल नथला बोध मतलब सेठी जनरल टू एम्पिरिकल थिला एमति थिला बट एम्पिरिकल टू जनरल जदी थिला ताले सेटा ही आंसर हबो मने रखता मने पकाओ टिके से क्वेश्चन टा इंडक्शन टू डिडक्शन सो दीज आर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग रेड रेड कहले रूल टू एग्जांपल जदि हम जाउछे ताहले डिडक्टिव गॉट इट समस्त एतिक बुझि गलो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग रो क्वेश्चन सब बेले आसुचे हला तापर देखिया आ कोन अछि हां साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल अगर निजर माइंड कोन कहू साइकोलॉजिकल माने निजर थिंकिंग तापर लॉजिकल फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअल जोटा सेटा को आगो देखो जहाँ देखि पड़छो जहाँ फील करि पड़छो जहाँ जानि पड़छो तापर रिप्रेजेंटेट करछ रिप्रेजेंट करछि कोटा सेठी कि जीवो होल टू पार्ट प्रथमे गोटा जाक जिंस जानो तापर ताको एनालिसिस कले कोन हबो छोट छोट पार्ट हबो तापर बुझिबा तो आज होल जिंसटा को बुझिले ताको तापर एनालिसिस करि परिबा और रिजेक्शन लिस्ट आसुन तो कोन करिवि गणेश कोन है व्हाई यू आर डाइवर्टिंग तमरो जदि रिजेक्शन लिस्ट देखिबार अछि जाओ डीओ ऑफिस आगे बस एठी कोन से प्रकार डिस्टरबेंस करनी तमरो सिलेक्शन हो जाई छि डीवी सर जाई छि तमे स्टाइल मारुछो तमरो सिलेक्शन हेइ जिवो तमे आराम से अछो काई एमती होछो इफ यू आर हियर टू प्रिपेयर देन जस्ट फोकस ऑन इट लेट गो अन्य सब जिंस पय से स्पेशल गपुची आसी किछि काम नथले भी आज या पिले एटा हेगला सेटा हेगला कहि कि मिछटार कहउछ तुमको बिकॉज़ तमरो से दोष अछि तमरो से मुंडर से जिंस पसी के अछि व्हाई यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट तो आसीनी जोटा आसी जीव काई एम देउछ काई गाली सुने होगे तो मजा लागुछ जोटा आसीनी आजी सेटा काली आसी जीव एबे आसी गले भी रिजेक्ट लिस्ट तो कोन हबो हां जते बेले भी आसीबो इट विल कम इन अ राइट ऑर्डर एट द राइट टाइम जते बेले आसीबो तुमको ऑब्जेक्शन रो चांस दिया जीवो व्हाई यू आर सो वरीड रिलैक्स डेफिनाइट देखो केते टाइम लॉस होला मु इरिटेट होबा चाहूनी तुम हला बट सब बेले एम दिले इरिटेशन आसीबो फ्रॉम डेफिनाइट टू इनडेफिनाइट जोटा क्लियर जिंस ताकू आगो जानिबा तापरे ताकू नेई की कल्पना जल्पना पछ जिंस जेमते एटा जेमते गणेश सर या गणेश तुमको बेसी गाली कर देली त रीजन हला कोन की डेफिनाइट जिंस रो इनडेफिनाइट आडे हमें जाउछी सब बेले हमें बेसी भावना दुनिया रे रहउछे व्हाई सो मच वरीड रिलैक्स काई के रहबानी all the above given settled principles
tenets, working rules, or general truths through which teaching becomes interesting, easy, effective is called maximum of teaching. डिवी रे कहार कटिबनी काहे एमती होछ methods and approaches of teaching English. For effective teaching, many methods, approaches, and technology or techniques of teaching are adopted and employed in the classroom. The methods and approaches of teaching English रे हमें बहुत जिनस अछि. An approach is a set of assumptions dealing with the nature of language teaching learning. Method is a overall plan. Method टा कौन? Method और approach देखो छोटो छोटो जिनस किंतु सब बड़े कंफ्यूज होचे हमें. एग्जाम रे जते आसो बुले कि पकई दबो सेते मेथड एंड अप्रोच भीतर तुम गांटी हेकि रहयो तापर क्वेश्चन रे भूल कर देकी आसीबो नेगेटिव मार्किंग होबो काहे कि भूल कर देकी आसीबो तार रीजन वाला छाड़ के आसी परिबोनी काहे कि ना मेथड और अप्रोच तो सहज जिंस तुम बहुत थर पढिचो बट एक्चुअली कांसेप्ट क्लियर ना सेते में करी के आसलो और जेहेतु ठीक रे बुझिनो बारंबार सुनिचो किंतु बुझिनो सुनिचो जेहेतु छाड़ के आसी परलोनी बुझिनो जेहेतु भूल करके आसलो बुझी परछो तो कांसेप्ट एम्ति ही पिलांगर भूल हे जाय अप्रोच इज ए सेट ऑफ अजम्पशंस dealing with the nature of language teaching and learning जे कोनोसी जिंस केवल एठी लैंग्वेज पढुचे तो लैंग्वेज लिखा जायछि जे कोनोसी जिंस पढेला बेले किछि अजम्पशंस हमें नउचे से अजम्पशंस बा लेट एटा ए जिंस को धरि कि चलो मने करो एटा से जिंसटा होछि अप्रोच मेथड इज ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल एंड all of which is based upon the selected approach approach टा होछि अजम्पशंस एमिति पढैले सेमिति आउटकम आसीबो एटा अप्रोच मेथड कोन एमिति पढैले सेमिति आसीबो एटा होछि अप्रोच हमें भाबुचे जे एमिति जदि पढा जिवो ताले रिजल्ट एमिति होबो ये होछि अप्रोच बट मेथड टा कोन टोटल ओवरऑल प्लान एटा पढैले एमिति पढैबी सेमिति आसीबो रिजल्ट ता परे एमिति पढै कि सेमिति हे कि पूरा फाइनल माने मेथड इज ए ब्रॉड बड़ जिंस मेथड टा गुटे अप्रोच ता अंडर रे आसी जो तो अप्रोच इज ए पार्ट ऑफ मेथड हमें कहि परिबा मेथड कहला बेलको बड़ जिंस सा बेस्ड अपॉन द सिलेक्टेड अप्रोच गुडा को हुए तो ठीक हेई पारे न हेई पारे बट सिलेक्टेड अप्रोच मानन को मिसई कि हमें गोटे प्लान बनौचे ओवरऑल प्लान टा को मेथड बोली कहउचे अजम्पशंस मींस लेट सत्य सही देखो हमें भाबीबा जे मने कर जाऊ एटा एमती कले सेमती होबो एटा होचे अजम्पशन बट एटा एमती कले सेमती होबो बहुत गुडे जिंस को जतबे कंबाइन करते बहुत गुडे अजम्पशन को हमें नेले आ ता भीतर किछि सिलेक्टेड अजम्पशंस नेले जो गुडा कि एक्चुअली फील्ड रे काम करी पारिबो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हे गले तो सेही गुडा को बाछि बाछि नई कि जो ओवरऑल प्लान टा बनेले सेटाला मेथड ए टेक्निक इज ए पर्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रेटजी देखो एटी अप्रोच मेथड स्ट्रेटजी सेति पे आज थंबनेल रे लिखिथिली इंपोर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड यस 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 सविता केमिति क्वेश्चन आसीबो पूरा एग्जैक्टली मु क्वेश्चन जतबे करबी सेटा पुनी करबी A technique is a particular trick or strategy which actually take place in a class. Technique must be consistent with a method and therefore in harmony with an approach as well. तेणु देख टेक्निक टा हो बा स्ट्रेटजी जहाँ को कहूचे बा ट्रिक जोटा को कहूचे जोटा हमें यूज करछे क्लासरूम रे से टेक्निक टा मेथड सहित मैच करथुवा दरकार एंड अप्रोच सहित मैच करथुवा दरकार सिलेक्टेड अप्रोचेस सहित मैच करबा दरकार यस मेथड होची यस बढ़िया लिप्स मेथड होची स्पेसिफिक अप्रोच जो अप्रोच टा को हमें जदि पुट करबा इनटू एक्शन ताले सक्सेसफुल रिजल्ट आसीबो बा एंड एई भीतर हमें डिफरेंट टेक्निक ट्रिक्स स्ट्रेटजी यूज करूचे जतबेले हमें गोटे मेथड कथा कहूचे बहुत गोटे सिलेक्टेड अप्रोच को नेकी मेथड तयारी होची एंड अप्रोच भीतर किछि किछि ट्रिक्स स्ट्रेटजी रहउची तो ए सब को मिसई कि हमें मेथड बा प्लान बनौचे और से अनुसार टीचिंग दोचे ओके ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश रे फास्ट असला तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होची इट इज नोन एज क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड जेमती हमें कहूचे लेक्चर मेथड को जेमती हमें कहूचे रोट लर्निंग इज एनकरेज्ड दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एथरे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड रे
ट्रेडिशनल कहली ट्रेडिशनल आसला माने रोट मेमोराइजेशन बा रोट लर्निंग को एनकरेज करा जिवो सिंपल कथा ओके इंग्लिश इज taught through mother tongue translation of each and every word phrase and sentence is done into mother tongue the translation रे जहाँ भी एमती जोटा मु पढौछि बे देखो एबे मन कर मु कहूछि जे ट्रांसलेशन रे एटा कले सेटा एटा मन कंप्लीटली मदर टंग को कोन हे जाउछि ट्रांसलेट कर दिया जाउछि यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड गोटे गोटे वर्ड को लेकिन सेंटेंस तैयारी प्रति सेंटेंस को एनालिसिस करा जाउछि मन रखि दियो बोली कहा जाउछि ट्रेडिशनल मेथड एंड ट्रांसलेशन कम कम ग्रामर मेथड जोटा ट्रेडिशनल मेथड यार फायदा सब बेले कोन लर्नर नॉलेज को यूज करछे एतरे किछि बड़ कथा नो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड एक्सप्रेशन कैन बी इजी अच्छा छाड़ी दियो नोन टू अननोन हमें जाउछे मोर इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्टेज जेतु एटा होछि रोट मेमोराइजेशन ऊपर पर्यवेसित अछि डिमेरिट्स कोन पावर ऑफ थिंकिंग को बंद करि दिए लर्नर्स फर्स्ट थिंक इन ओडिया and then translate their thoughts ideas into English that is cumbersome माने इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस आ कोनो से एमती मतलब नाही कि जा जे कोनो से जिंस को हमको कहिबार अछि तो हम प्रथमे भाबुचे ओडिया रे तापर कहूचे ट्रांसलेट करि के इंग्लिश तो it does not improve the oral fluency correct pronunciation stress intonation and neglected unnatural method not suitable with class when class is heterogeneous तो सब बेले क्लास कहीं के क्लासरूम रे सब प्रकार रो छुआ छंती emphasis दे memorization ऊपर dull and mechanical and hence boring method होची कोटा translation कम grammar method next है direct method कौन this method is also known as natural or reformed method ओके अब ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को रिप्लेस करके इवॉल्व हैला नवा मेथड हिसाब रे नेचुरल रिफॉर्म्ड मेथड और डायरेक्ट मेथड एटा कोन प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर क्रूशियल अब यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस ऊपर फोकस कला मेरिट कोन प्रोवाइड्स नेचुरल वे ऑफ लर्निंग डेवलप फ्लुएंसी ऑडियो विजुअल एड्स को यूज बेसिक कला टू मेक लर्निंग इजियर involve more activities hence interesting basic activities छुआ करि परले या द्वारा face real life situation learner ready to face real life situation direct method रो demerit होउची टाइम कंज्यूम अधिका करिवो एक्सपेंसिव होबो जेहेतु टीएलएम बेसी यूज करछि बा ऑडियो विजुअल एड्स यूज करछि and suitable for linguistically minded students only language जे जानिछि भलरे ता पई ही suitable only teachers with good command over English are required follow English command किबा दरकार no use of mother language as it ignores translation completely जेहेतु ट्रांसलेशन को इग्नोर कर दोछि तो मदर लैंग्वेज रो यूज रहिला नाही तो एटा भी नेगेटिव तापर जोटा इंपोर्टेंट जोटा एग्जाम रे आछुछि ता ऊपर को जाउछि डायरेक्ट आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम एटा टिके हैंग हेछि लेट मी क्लोज एंड रीओपन इट वेस्ट मेथड दरकार नहीं बाइलिंगुअल मेथड को जिबा बाइलिंगुअल मेथड त माने जानिछो अच्छा substitution table method this method can be used with any age group जे कौन से एज ग्रुप रे यूज करा जाए it was devised to supplement direct method को चेंज करके आसथिला छाडी दवा तापर आसला बाइलिंगुअल मेथड जोटा डेवलप करथिले सीजे डॉडसन in late 1967 it a midway between the direct method of translation कम grammar method रो मझिरे एटा को से डेवलप करथिले तो एटा भी मु बेसी डिटेल रे जाउनी आगु को जिबा मेथड्स को छाडी की अच्छा एक्टिव लर्निंग मेथड गोटे अछि जोटा कि इन्वॉल्व द लर्नर्स डायरेक्टली एंड एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस बहुत इंपोर्टेंट एथर क्वेश्चन आसी पारे जेतु एक्टिव लर्निंग मेथड टा and the improves critical thinking interpersonal माने person भितरे communication skill को improve करिवो perform strategies promoting active learning
ଆଉ ଏଠି ଗ୍ରୁପ डिस्कशन प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी रोल प्ले जर्नल राइटिंग डेवलपिंग द टारगेट लैंग्वेज ए सब जिंस आछि एक्टिव लर्निंग मेथड इज ए गुड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अप्रोचेस फॉर टीचिंग इंग्लिश तापर आसला अप्रोचेस ये तो मेथड गला स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच एसओएस अप्रोच ऊपर क्वेश्चन आसे यस एसओएस अप्रोच तापर रीडिंग अप तापर राइटिंग ए वे रे ही हबा कथा सिंटैक्स शुड आल्सो बी टॉट बिसाइड्स वर्ड केमती प्रोनाउंसिएशन करिवो एंड वर्ड रो फॉर्मेशन ए सब जिंस मध्य पढ़ा जिबा दरकार अकॉर्डिंग टू Hornby, there are approximately 275 structures in English. Speech and oral work are the central part of this approach. तीनटा phases अछि presentation, practice and production. कोथि SOS model. SOS कोन structural, oral, situational. Presentation, practice, production. तीनटा P, 3 phases अछि. तापर merits of SOS कोन all the 4 basic skills are given equal importance कौन basic skill L S R W listening speaking reading writing को equal importance दिया जाए to get practical command over these 4 sub basic skills of language. This approach lays emphasis on learning of language in context of situations. Next है demerits कौन too much stress on drill work and not convenient in overcrowded classroom रे SOS applicable नुहे कोची तापर असला communicative approach communicative language teaching communicative approach applies to both spoken and written language दीटा जाको पई apply करे it combines lexical items into meaningful and communicative expressions एठी मु तो मन को कहबी जे एटा ए पार्टटा तुम माने टिके सेल्फ स्टडी करिवो हाँ नेचुरल अप्रोच जदि देखिबा ताहले एटा दिस अप्रोच वाज गिवन बाय स्टेफन क्राशन एंड टीडी टेरल which helps in learning the second language without using printed text. It is based on the following hypothesis. Hypothesis होची acquisition of learning hypothesis, natural order of hypothesis, monitor hypothesis, input hypothesis. तो या ऊपर क्वेश्चंस टिके रेयरली आसार चांसेस से मैं डिटेल रे कहूनी इंपोर्टेंट जो पार्ट ता सेठी की डायरेक्ट पळी जाउची दिस पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन लैंग्वेज स्किल्स को जिबा Teaching of a language is the development of 4 basic skills that is listening, speaking, reading, writing to complete communication. These are generally known as LSRW. These skills are related to each other in the following ways. केमती related अछंती देखो मु कहिछि एटा भी आगरु रिसेप्टिव कोन आ एक्सप्रेसिव कोन रिसेप्टिव होछि जा माध्यम रे मुंडो भितरे पसिला लिसनिंग और रीडिंग द्वारा हम मुंडो भितरे पसिला तेनो हम रिसीव कले तो रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव माने हम मुंडो भितरु बाहरिला माने स्पीकिंग और राइटिंग माध्यम रे हमर थॉट्स को हमें प्रकाश कले स्पीकिंग और लिसनिंग होची ओरल रिटन होची रीडिंग और राइटिंग ओरल फॉर्म रे हमें सुनुचे जने कहिले हमें सुनुचे एंड हमें कहिले आ जने सुनुचे तो ये ओरल कम्युनिकेशन रिटन होची रीडिंग जने लिखिछ तो हमें पढुचे किमा हमें लिखिछ तो आ जने पढुचे ओके नेक्स्ट डेवलपिंग स्किल्स Listening and speaking skills are vital language skills to develop when learning English. Hence, they are known as primary skills. को दीटा listening और speaking को primary skill बोली कहा जाए ये दीटा ऊपर दीटा बहुत important exam रे आती होने आती तापर speaking and writing are also known as reinforcement skills or secondary skills. ओके reinforcement और secondary skills बोली कहा जाए कहा को speaking और writing को तेनो speaking और writing ए दीटा होची secondary किंतु listening और reading ए दीटा होची primary skills okay development of these skills develops fluency accuracy and appropriacy among the learners listening skill टा कोन listening skill is related with hearing input जहा सुनेवा द्वारा मुंडो भीतर पसला ताको हम कहूचे listening skill listening और listening skill भीतर फरक अछि सुनुचे केमिति सुनुचे और कोन बुझुचे आ ताको केमिति एनालिसिस करूचे केमिति परसेप्शन हमर केमिति डेवलप होउचे ये होउची listening skill listening अलगा listening skill अलगा
तम समस्त को वर्तमान मु पढ़ौची मु कहूची मु सुनौची कथा तो तुम मान को तमे समस्त सुनुच यू आर लिसनिंग बट तुम लिसनिंग स्किल कहबो जे तुम केमती लिसनिंग करछ हियरिंग इनपुट को केमती प्रोसेसिंग करछ सेटा होची लिसनिंग स्किल केवल सुनी दबाटा लिसनिंग स्किल नो एथरे कोनोसी कौशल नाही ताहले ओके listening skill is related with hearing input. It is receptive language skill in the oral mode. Learning of a language starts from listening. कहीं LSRW रे जे कौन जिनस स्टार्ट कोठी होची सिखिबा में कोठू स्टार्ट करछे लिसनिंग रो speech rhythm pronunciation of words are learned by listening to appropriate language models ये होची listening skills. A listener has to recognize stress, rhythm patterns, tone patterns, intonational देखो ଏବେ listening skill वाला तुमको समस्त को कहूचे बे काली करथिल टिके पूर्व तो तुम माने से जो रिदम अछि जो रिकॉग्नाइज करिवार अछि स्ट्रेस केते अछि जणे जेतेबेले कहूची कोटा को इंपोर्टेंस दउची को जिनसटा जेतेबेले वॉइस मॉड्यूलेशन कथा में क्लासरूम रो इंटरेक्शन कथा में कहूचे टीचर करो वॉइस मॉड्यूलेशन इंपोर्टेंट कोटा को स्ट्रेस दे की कहउचंदे टीचर एटा इंपोर्टेंट बोली कहले टीचर एथरो क्वेश्चन आसीबो बोली कहले टीचर तो एटी रिकॉग्नाइज करिवार अछि सब जिंस को कोठी स्ट्रेस दिया जाउची टोन पैटर्न्स वॉइस मॉड्यूलेशन कोठी हला ए सब जिंस होची लिसनिंग स्किल रो पार्ट ए लिसनर रो काम होची एटा जे स्पीकर अछंती जे कहउचंती जे को वे रे कहउचंती को जिंस को सेटा को बुझी जीवा दरकार अछि लिसनिंग स्ट्रेटजीज two different learning strategies are followed for different learning purposes. These strategies are as follows. Top-down strategies. Top-down strategies. Right? These strategies are listeners best that make sense of what we are listening to. Listening to the main idea, making a prediction, drawing inference, summarizing and identifying the topic. तो मु जहा पढ़ौची ताकु सुनिकी मेन आइडिया ताकु ड्रॉ करिबा प्रेडिक्शन करिबा जे कोन एथुर क्वेश्चंस आसी पारे इन्फ्रेंस ड्रॉ करिबा जे कोन दरकार हबो हमरो ये फ्यूचर रे सब टॉप डाउन बॉटम अप स्ट्रेटजी होची लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स and involve tasks that for on understanding that is sound or word level recognizing cognition relation of sound word recognizing word order pattern bottom of the word को recognize करिबा sound को recognize करिबा ଆଉ बुझिबा but top down टा मेन आइडिया ऊपर डिपेंड କରୁଛି ओवरऑल आइडिया समराइज करिबा इन्फ्रेंस ड्रॉ करिबा कंक्लूजन ड्रॉ करिबा आइडिया गेन करिबा से ऊपर ये होची टॉप डाउन स्ट्रेटजी तापरे लिसनिंग एक्टिविटीज लिसनिंग स्किल पर लिसनिंग एक्टिविटीज रे आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन ऑफ मैसेज एंड ओरिएंटेशन और डिटरमिनेशन ऑफ मेजर facts about message identify the main idea of comprehension replication and reproduction of the message orally or in writing तो एते डिटेल्स मु कहूनी लिसनिंग स्किल परे हमें आगु को जिबा अच्छा स्पीकिंग स्किल रे हमें जानला जे एटा प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल एठी जोडी देखि थिले हमें स्पीकिंग स्किल्स कोडी थिला एक्सप्रेसिव थिला और सेकेंडरी थिला जदियो ओरल बट इट इज इन एक्सप्रेसिव हमें निजर आइडियाज को शेयर करछे स्पीकिंग स्किल रे एंड इट इज सेकेंडरी स्किल ओके the speaking skill it is a crucial part of learning and regarded as the measure of knowing a language तो स्पीकिंग जदि हे गला ताले जानी गला लैंग्वेज बोली हमें बुझी जाउछ तापरे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग स्पीकिंग कोन दरकार स्पीकिंग पढेबा टू मेक लर्नर्स एफिशिएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली ऑन टॉपिक ऑफ एवरीडे लाइफ निजर भाषाटा को एमती शिखि जीवा दरकार एफिशिएंट ले जानी जीवा दरकार कि निजर मनोभावटा को एक्सप्रेस करि परिबे देमसेल्व्स फ्रीली टू डेवलप वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी तो एटा भी बेसी मु कहूनी इंटरैक्टिव कोन
टेलीफोन कॉल फेस टू फेस कन्वर्सेशन ए सब होची इंटरैक्शन पार्शियल इंटरैक्शन होची स्पीच और लेक्चर्स एबे हमर कोन होची एटी इंटरैक्शन होउनी एटी होची कंप्लीट इंटरैक्टिव होउनी कहीं टेलीफोन कॉल की फेस टू फेस कन्वर्सेशन तो हमर होउनी हमर होची कोन वर्तमान स्पीच बा लेक्चर सेमती हमें कहि परिबा जे पार्शियल इंटरैक्टिव होची तम माने किछि कमेंट करके मते जणाई दोछ जे हमें सुनुछु तमनकर प्रेजेंस मु जानि पारुची एतिक पिला अछो सुनुचो and non-interactive होची recorded speech एबे लाइव अछि हमें partially interact करूचे so it is in partially interactive phase okay speaking strategies using minimal responses students have to indicate understanding agreement doubt or other responses by responding in yes or no or by their gesture द्वारा gesture माने इशारा द्वारा जणेबे बा मुंडा हले कि जणेबे जे केमती इंटरैक्शन होउची ओके नेक्स्ट स्किल टाक मु जिबी तम माने बाकी गुडा को देखिबो स्पीकिंग एक्टिविटीज हेल्प इन डेवलपिंग कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स द फॉलोइंग इंपोर्टेंट एक्टिविटीज शुड बी प्रॉम्प्टेड स्पीकिंग स्किल डेवलप करबा पई कोन कोन दरकार increase confidence among learners they should be allowed to speak about whatever they can irrespective of grammatical error he jauchi to he jane do at the primary level the speaking activities should include greeting informal request asking personal information etc primary stage re hi hello bye or informal requests can I have your pen please can I have your pen to basic formal pen please can I take your pen asking personal information etc what is your father learners should not be pressurized to give answer quickly so that they would overcome their shyness जेतु नुआ लैंग्वेज सिखुचंती तो तांको पूरा टाइम दे दियो सो दैट से माने तांकर लाज कुड़ी लता को झाउळी न देई के आंसर देई परिबे pronunciation errors should be corrected without any humiliation okay learners should be asked to describe a picture audio lingual drills karao tech based games task based games should be performed learners should be encouraged to talk more and more jete adhika kotha kaibo ku diyo right encourage karibo to ya द्वारा कोन हेगला तार स्पीकिंग स्किल आसीगला स्पीकिंग पर कोन हला our tongue twisters can be used to improve pronunciation okay तापरे रीडिंग स्किल रे कोन अछि एटा हमें जानि छे जे रीडिंग स्किल टा होची रिसेप्टिव काहे कि पढी कि हमें जानु छे भीतर को नउचे तो रिसेप्टिव हेगला ओके चलो डिकोडिंग प्रोसेस रीडिंग टा कोन हमें जहा पढिले ताको डिकोड कले तार मीनिंग बुझिले ये होची डिकोडिंग प्रोसेस रीडिंग हेल्प्स द लर्नर्स टू ऑब्जर्व वोकैबुलरी ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर pronounce words correctly and understand meaning of words component of reading रे कोन अछि देखो एथुर क्वेश्चन आसीबो phonics टा कोन इज ए कनेक्शन between sounds and letter symbols it is the process of mapping sounds in words to written letters the unit of sound को कोन कहा जाय क्वेश्चन आसी what is the unit of sound कोन यूनिट ऑफ साउंड माने से जो साउंड वाला यूनिट नो फ्रीक्वेंसी वाला कथा हम कहूनी फ्रीक्वेंसी तो डेसिबल है जो फोनेम कोन फोनेम से जो फोनिक्स टास्क ओके चलो it is one of the earliest reading skill learners should develop because it introduces them to the link between letters and sound letter of sound with a link के कराए रीडिंग टा लेटर टा को पढ़ी देले साउंड रे प्रकाश कर देले रीडिंग हे गला ना ओके vocabulary कोन डेवलपमेंट ऑफ vocabulary in the fundamental part of academic and reading success learners must understand the meaning of the words in order to comprehend or understand what they are reading the vocabulary development in one of the important component of reading skill so that semane je kon jinso पढुचंदी ताको comprehend करि परिबे understanding आसी परिबो तापर असला fluency
It is the ability to read text accurately and smoothly. It is developed from reading practice. It helps learners to move from decoding words to sight reading. Repeated oral reading is the best way. And tapre asla phonemic awareness. Chalo. Methods of teaching reading. Alphabetical method, phonic method, whole word method, phrase method, sentence method, story method. Different type of methods ଅଛି। टाइप्स ऑफ रीडिंग एटू क्वेश्चन आसे सब बेले एक्सटेंसिव रीडिंग कोन, इंटेंसिव रीडिंग कोन, साइलेंट रीडिंग कोन, लाउड रीडिंग कोन। एक्सटेंसिव कोन, इंटेंसिव कोन, फर्स्ट को मते रीडिंग स्ट्रेटजी रे देखो जते बेले हां एटा भी क्वेश्चन आसे ना स्कीमिंग आ स्कैनिंग आसला तमरो सब देखिबा बट एटा फर्स्ट देखि कि जिबा एठू कोन कहली मु एक्सटेंसिव रीडिंग आ इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग माने कोन ओवरऑल आईडिया आनिबार अछि। इंटेंसिव रीडिंग माने कोन इंटेंसिव माने भीतर पसिकी हां तो पूरा अंडरस्टैंडिंग आसिबार दरकार। अंडरस्टैंडिंग आसिबार दरकार इंटेंसिव रे। एक्सटेंसिव रे ओवरऑल ऊपर आईडिया गोटे कंप्लीट आईडिया गोटे आनी जबार अछि जे कोनटा लेखा आइछ जस्ट जानि दिबा दरकार। The pre-reading activities रे जोड़ा अछि skimming माने होछि is a quick survey of the text to get main idea. It is fast reading activity. Fast reading activity. Question आस्तिबो एग्जाम रे 100% आस्तिबो। हां जिस्ट इंटेंसिव रे इंटेंसिव टा होछि यस डिटेल्ड स्टडी और नॉन डिटेल्ड टा होछि एक्सटेंसिव। स्किमिंग टा होछि गेट मेन आइडिया जिस्ट जानिबाटा होछि स्किमिंग। स्कैनिंग होछि क्विक रीडिंग फोकसिंग ऑन लोकेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कोठी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जदि खोजुछि कोठी बाहरी छि जेटर रिजल्ट बाहरिबो बा हाई कोर्ट रो रहिता देश उठिला बा रहिता देश जारी होला जहा भी तमे खोजुछो से पॉइंटटा जेटी विषय कोट लेखाइ छि सेटा खोजुछो से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टा कोठो न्यूज पेपर रो सेटा स्कैनिंग जेटी 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 कोठी कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति कोट लेखाइ छि बोली पेपर दैट इज स्कैनिंग। स्किमिंग कोन पेपर रे कोन आछि आछि बा एबे आसिला मानकर तमरो बजेट आसिला बजेट कोन विषय रे कहिछि ये होछि स्किमिंग मेन आइडिया आनियार अछि जे बजेट कोन कहछि। गेस अच्छा एठी आउ दुटा छाडले हमें प्रीव्यूइंग एटा होछि प्रीव्यूइंग मींस रिव्यूइंग टाइटल्स सबटाइटल्स सेक्शन हेडिंग्स फोटो कैप्शन एगुडा सब देखिबाटा प्रीव्यू। प्रीव्यू माने हला से कोन कोन हेडिंग्स अछि सेगुडा देखि दो खाली हला। तापर हला प्रेडिक्टिंग using knowledge of the subject matter to make prediction about content and vocabulary and check comprehension। तो predict तो तमने जानिछ जे हां सकाळ कुहुडी के देखि कि कहबो जे शीत कमी गला कि बढ़ी गला जा। हां स्कैनिंग होछि फाइंडिंग आउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्किमिंग होछि ओवरव्यू यस। गेसिंग फ्रॉम कंटेक्स्ट गेसिंग फ्रॉम कंटेक्स्ट माने गेस करिवा जे कोन आकु होबार अछि नोन वर्ड्स यूजिंग प्रायर नॉलेज को यूज करिवा। Paraphrasing कोन paraphrasing means stopping at the end of a section to check comprehension। paraphrasing टा बेले बेले क्वेश्चन आसे जोडा हमें केबे सुनने बोली छाडी दउ कि पळे आछे। paraphrasing होछि कोन गोटे पार्ट टा पढिले पढिला परे गोटे लास्ट रे हम टिके समय रहि गले आ बुझिबा को चेष्टा कले जे कोन पढे पढिले। paraphrasing means stopping at the end of section to check comprehension। तो एतिक जिंस अछि तो एटा पढि सरला परे हम चेक करिवा पय टिके रहि गले एट द एंड ऑफ द सेक्शन टू चेक वेदर what is the main idea what we have gone through जोटा पढि सरले तर आइडिया टा कोन थला। रीडिंग एक्टिविटीज should be based on the following concepts केमते डेवलप करिवा। increase communicative competence build confidence of the student recognize purpose of reading काहे कि पढुचे सेटा recognize करियो। for example to get the main idea developing reading activities। प्री रीडिंग कोन प्रिपेयर द लर्नर्स फॉर रीडिंग। प्री रीडिंग रीडिंग पूर्व कोन प्रिपेयर करिवा छुआ को केमते प्रस्तुत करिवा। दिस इंक्लूड स्कीमिंग ओवरऑल आइडिया गेसिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट कोन लागु कोन विषय लेखा जाइथिबो प्रीव्यूइंग एंड प्रेडिक्शन। above activities are very crucial at lower level of language proficiency while reading। देखो तीनटा पार्ट हम जानि छे प्री रीडिंग while reading और पोस्ट रीडिंग। ओके while reading activities कोन स्कैनिंग
Reading for pleasure, intensive reading so that the learners can answer carefully chosen question. देखो intensive reading माने बुझिलो पूरा भितर जाइके बुझिबाटा जिंसटा पूरा भलो से बुझिबा। ओके ठीक। Intensive reading so that the learners can answer carefully chosen questions. Reading activities at the primary level, reading must be introduced through stories. Asking prediction questions help in comprehension. Silent reading helps in inferring meaning of new words from the context. Yes, वो help कौन छाड़ दियो। Writing skills को पढ़े असली बहुत time taking बहुत जिनस देइछ तो तम माने आउ टिके भल से पढ़िबो डिटेल रे जते बेले टाइम पाइबो। ओके राइटिंग स्किल enable students to brainstorm. Brainstorm माने कौन मुंडा झड़ to do mental exercise. Mental exercise टाको brainstorm कहूची। Ideas, organize them, draft, edit, and revise his her work. Without writing, it is very difficult to keep in mind the various aspects of the subjects, and it is means of preserving knowledge. Writing skill ଟା ହଉଛି knowledge ଟା preserve କରିକି ରଖିଥିବା ବା ଲେଖିକି ଯୋଉଟା ରଖିବାଟା preserve କରିକି ରଖିବା ବୋଲି କହିପାରିବା। Writing skill is useful means of organizing thoughts and giving it precision. It reinforces oral and reading work. The writing टा letter style uniformity maintain हवा दरकार एगुड़ा सब characteristics of good writing. Vertical style is regarded as the best style of writing. कौन कौन रहिबा दरकार legibility. Quality of being clear enough to read. Letters should be written correctly and nearly so that they should be easily read. ये होची legibility. तापर आसला spacing. Spacing कौन proper gap between letters रहिबा दरकार between words रहिबा दरकार। Okay. Size of the letter should not be too big or too small. It should be in proper shape. Simplicity. Letter should be simple. Italic रे लिखिबा तो ये सब होची letter style and uniformity केमती writing रे हमें maintain करिबा। Okay, next techniques of teaching writing. By overwriting, students should be asked to overwrite a letter. A एमती लेख ता ऊपर छुआ और पांच थर एमती करी गारेथिबो तो माने पिला बेले भी करिसु। With the help of board, the teacher can write a letter on the or a word in a line on the board and ask the students to copy them in their notebook. जेमती हस्ताक्षर लेखन्ति सेमती लेखि दैछन्ति टीचर। तापरे copying a line. Teacher can write a line in the notebook of the student and ask आस खाइबा लिखि दैछन टीचर ता तळे छुआ कोन करछि बारंबार आस खाइबा ए जिंस को लिखिछि हां दस्तर लेख बोली कहि दैछन टीचर छुआ लिखिछि ता तळे तळे बुझिला त एटा होछि ask them to copy it on the whole page पूरा पेज रे लिखर दस्तर तापरे copying a paragraph in the letter stage the teacher can ask the students to copy the paragraph from the textbooks बुझि पारलो कोन कहउछि एतिकी क्लियर ओके तापरे टीचिंग राइटिंग ड्रिल रनिंग इन penmanship कौन एटा consists of two stages. First stage students are taught free hand writing drawing. In the second stage students are acquainted with letters. प्रथमे फ्री हैंड जेमती गारी परछो गोल गोल बुलाई परछो जते मुंडुळा बुला गो मुंडुळा बुला गंती गोल गोल करियर अछि हो छाडो कॉपिंग टेक्स्ट को कॉपी करिवे बारंबार तापरे ट्रांसक्राइबिंग माने recording a thought speech or data in a written form. ट्रांसक्राइबिंग माने जहाँ भी लेखिले सेटा को रेकॉर्ड करिवे स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू ट्रांसक्राइब ए सेट ऑफ वर्ड्स और ए सेंटेंस छाड़ी द कंपोजिशन ओके माइक्रो रिलेशन प्लानिंग को मु जाउचे एटा समस्त पई दरकार केवल इंग्लिश पेडागोजी नो समस्त पई दरकार।
Micro teaching is a very effective technique that is used in teacher education, where a teacher trainee teaches a small portion of the lesson to a small group of his classmates. बहुत बढ़िया अच्छे. Classmate, small group, small portion of lesson. को माने पढ़ाती? Teacher trainee बा जाओ कमें कोचे. Pupil teacher. In micro teaching, a teacher trainee finds opportunity to develop skills in drawing learners' attention, asking questions, using and managing time effectively, and bringing the lesson to the conclusion. Micro teaching helps develop skills to prepare lesson plans, choose teaching goals, speak in front of a group, and ask questions. ତ ଏଠି ତମମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ DW ଆଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଲେନ୍ DW defined micro teaching as a scale down teaching encounter in a small class size and class time. क्लास साइज भी छोटो थाए क्लास टाइम भी कम थाए तेणु स्केल डाउन टीचिंग बोली कहिले माइक्रो टीचिंग को इंट्रोड्यूस कले DW आलेन. Okay. Next, MB Boch has given a comprehensive definition of micro teaching as a teacher education technique which allows teachers to apply clearly defined teaching skills to carefully prepared lessons in the planned series of 5 to 10 minutes. तो एटा किए कौन कहिला सेटा मैटर करूची देखिबो यार जो स्केल डाउन बोली कुआगला एतरे 5 रु 10 मिनिट पर्यंत पढ़ा जाए 5 रु 10 टा पिलांकु नेकी करा जाए तेणु एटा को कुआ जाउची स्केल डाउन टीचिंग यूजिंग क्लासरूम एज ए रिसोर्स. देखो एटी डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान. यूनिट हाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रो स्टार्ट हो DWLN देखले. The unit plan includes a number of lesson plans. A lesson plan is a plan for one period only. But unit plan रे बहुत गुडे कौन अच्छी लेसन प्लान अच्छी किंतु लेसन प्लान टा केवल गोटे पीरियड रे कौन पढ़ा जीवो सेति लेसन प्लान इज ए मोर डिटेल प्लान देन ए यूनिट प्लान. लेसन प्लान रे डिटेल जिंस रोच बट लेसन प्लान इज ए मोर डिटेल प्लान. ए लेसन प्लान इज ए मोर डिटेल प्लान देन ए यूनिट प्लान. एटा टिके भूल जाइछ तो एठी हवा कथा कोन unit plan. Unit plan is a more detailed plan than a lesson plan. The lesson plan or unit plan vitaru acha lesson plan is a plan for one period only but unit plan hochi includes a number of lesson plan tenu unit plan ta more detailed and a lesson plan is less detailed plan than unit plan. Eta tike rectify hobo. Unit plan takes into account all the aspects of language teaching learning. Language teaching learning रो सब aspects को unit plan नौची तेणु unit plan is more detailed. Lesson plan concentrates only on one or two aspects of language teaching learning तेणु एटा होची less detailed. Okay. Sample of unit plan एटा गोटे जोटी की यूनिट रो टाइटल रहला टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स अलॉटेड फॉर द यूनिट पाई मानकर 5टा पीरियड अछि लिखिलो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कोन एथरे लर्न करिवो छुआ एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग मटेरियल वा TLM कोन कोन यूज होबो तो ब्रेक करिवार अछि वीक 1 रे कोन पढिबो वीक 2 रे कोन पढिबो से विषय रे असेसमेंट कोन कोन करिवो टेस्ट कोन कोन दबार अछि तार भीतर एंड रिमेडियल टीचिंग जदि कार दरकार हला तामे using classroom as a resource. Lesson planning. Teacher needs a lesson plan for effective teaching learning process. The lesson plan is very important and useful plan to attain the goal and objective of the teacher actually imagines a lesson before it has happened.
involve predicting, anticipating, sequencing, organizing, simplifying as per the level of the students. The lesson plan रे students रो level अनुसार हमें predict करिवा, anticipate करिवा जे कौन कौन एथुरु शिखी पारंती से माने कोठी एरिया रे डिफिकल्टी जदि आसीबो ताको केमति हमें इजी करि परिबा, sequencing करिबा, का परे कोटा पढाइबा, organize करिबा and simplify करिबा. It provides use with the general outline of teaching goals, learning objective, means to accomplish them. Successful lesson plan addresses integrates three key components: objective of students learning, teaching learning activities, our strategies to assess student understanding. ये सब जिनस रहिला एथरे. तापर जो देखिबो ICT, use of ICT for teaching of English at primary level, information and communication technology को केमते यूज करे जो primary level रे English पढ़ेवा पई. So it is the need of the hour for the teachers to of today to change their teaching strategy. टीचिंग स्ट्रेटजी को चेंज करिवार अछि, स्लाइड प्रोजेक्टर्स यूज करिवार अछि, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स यूज करिवार अछि, सीडी डीवीडी मध्ये यूज करि परिबे, इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड जाकू आईडब्ल्यूबी बोली कुआ जाउछि, इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड को यूज करि परिबे, डिजिटल प्रोजेक्टर को यूज करि परिबे पढेवा पई, सो दैट तांकर अंडरस्टैंडिंग बेटर आसीबो, इंटरैक्टिव हे परिबो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. और ये होची यूज ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल. ऑनलाइन डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, पिक्चर्स डिक्शनरी, टॉकिंग डिक्शनरी जे सब को देखै परिबे, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को यूज करि परिबे, मोबाइल गैजेट को यूज करि परिबे, लैंग्वेज गेम्स को मध्य व्यवहार करि परिबे. तो ये सब हेला तमरो केमती इंग्लिश को पढ़ेला बेले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करा जाय परिबो. ओके, तापरे रहिला तमरो ए जो एरिया गुडा अछि एटा गोटे अलगा क्लास नबा को पडिबो मते, काहे कि एथरे आहुरी बहुत गुडे जिंस अछि जेमति कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड पियाजे. तो पियाजेंकर, वाइगोट्स्कींकर एनसीएफ 2005 अछि, नेक्स्ट आरटीई अछि, राइट टू एजुकेशन, provision of RTE, तापरे NP अछि, national policy on education अछि. So this will take another class. Inclusive education अछि, and inclusive education रे different type रो जिनस आसिला. तापरे evaluation अछि, evaluation रे CC अछि. तो this PDF is very important one, formative evaluation assessment या ऊपर tools and techniques of evaluation, standardized test, observation test, checklist type of assessment. तो assessment और evaluation part टा रहि गला जोटा को मु पुणी आ गोटे सेशन रे कवर करिवि. and this PDF will be available in application आउ या सहित रिलेटेड सब क्वेश्चंस मध्ये एठी अछि. एठु देखो, एठु सब क्वेश्चन विथ डिटेल एनालिसिस ऑफ आंसर विथ आंसर एंड तार एनालिसिस. तो टोटल PDF रे जदि तुम मन देखिबो देन it has many important questions of on English pedagogy, normal pedagogy, and with answer and explanation why the answer is so and so, right? तो एटी तुम माने बेसी नहीं मात्र पाइबो क्वेश्चन 123 टा क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चंस आर हियर. सो स्टे कनेक्टेड. समस्त को मेनी थैंक्स. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. लाइक शेयर कर दो जदि इच्छा हो. एंड थैंक यू, धन्यवाद समस्त को. से पीडीएफ टा तुम मन को एप्लिकेशन रे फ्री जोन रे मिल जो. तो जो माने चाहिबो एप्लिकेशन को इंस्टॉल करिनियो, एटा को डाउनलोड करि परिबो एप्लिकेशन रो. फ्री पीडीएफ्स रे एटा को अवेलेबल करे देबी. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू. स्टे कनेक्टेड. टेक केयर एवरीवन. पुणी देखावा नेक्स्ट सेशन रे. एंड समस्त को मेनी थैंक्स. थैंक यू फॉर योर इंटरेक्शन, योर एक्टिव इंटरेक्शन. एंड जिते बेले एमती गोटे सेशन थाए तो बहुत एनर्जी दवा को पड़े. बहुत स्पीड रे कली, बहुत जल्दी सरियार थिला, टारगेट रे रखिथिली, बट सब कवर करी हेलानी. सेति पई भी आ गोटे सेशन मते आनिबा पड़िबो. सब सेत्रे कवर कर देबी जोटा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन रो मेन पार्ट रहइबो. थैंक यू फॉर वाचिंग. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. टेक केयर. जय जगन्नाथ.